नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां इस वक्त नासिक में है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो मंदिर की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और पूजा प्रार्थना वहां पर उन्होंने की। इस दौरान प्रधानमंत्री को एक भेंट भी दी गई। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 12 से 16 जनवरी तक हर साल इस महोत्सव को मनाया जाता है। काफी संख्या में जो युवा हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो नासिक का कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक के बाद में मुंबई का भी दौरा रहेगा, जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आज नासिक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत वहां के लोगों ने किया। उन पर पुष्प बरसाए, मोदी मोदी के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी उस दौरान स्वीकार किया। उसके बाद में काला राम मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। और उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं। और बस अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, जब वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार आपको बता दें कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का ये कार्यक्रम रहेगा। और इस बार की जो थीम है वो है विकसित भारत एट 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर जो है वो अक्सर युवाओं के लिए होता है और हमारे देश भारत को युवाओं का देश भी मानते हैं। तो ऐसे में इस बार की थीम भी युवाओं के लिए खासतौर पर रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक ऐसा मंच दरअसल बनाना चाहता है जहां पर भारत के तमाम क्षेत्रों के जो युवा हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ में अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, साझा कर सके और एकजुट होकर जो हमारा देश है, जो राष्ट्र है, उसकी एक मजबूत नींव हो सके। और इस बार जो ये पूरा महोत्सव है उसमें पूरे देश से करीब 7,500 युवा प्रतिनिधि इस महोत्सव में हिस्सा लेते हुए हमें नजर आएंगे। साथ ही इस महोत्सव की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक प्रदर्शनी यहां पर हमें देखने को मिलेगी, स्वदेशी खेल होंगे, भाषण होंगे, विषयगत आधारित प्रस्तुति, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव। ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो इस महोत्सव के दौरान इन 5 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवा हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो युवाओं को आगे आने के लिए, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, जो उनके अनुभव है उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए ये एक मंच है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव के जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान युवाओं के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। और इस संबोधन में वाकई देखना होगा कि प्रधानमंत्री किन बातों को अपने संबोधन में रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में अक्सर युवाओं की बात वो जरूर करते हैं और युवाओं को एकजुट करने की बात करते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की बात करते हैं। तो इस बार जो आज का संबोधन होगा वो वाकई देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक के काला राम मंदिर की, ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज महाराष्ट्र में वो पहले नासिक में इस वक्त मौजूद हैं, उसके बाद में उनका मुंबई का ये दौरा रहेगा। मुंबई भी जाएंगे जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे। समुद्र पर बना हुआ सबसे बड़ा ब्रिज है ये अटल सेतु, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इस वक्त अब से कुछ ही देर में नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनका संबोधन भी होगा इस दौरान और ये संबोधन खास तौर पर युवाओं के लिए होगा। आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है, जिससे कि युवाओं को बढ़ावा मिल सके। अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों से युवा इस महोत्सव में शामिल हों, अपने जो अनुभव है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो उन तमाम चीजों को लेकर हर साल इस महोत्सव का आयोजन होता है और इस बार भी 5 दिनों का ये महोत्सव रहेगा। 12 जनवरी से यानी कि आज से ये महोत्सव शुरू होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन होगा और उसके बाद में 16 जनवरी तक ये महोत्सव रहेगा। इस दौरान कई सारी चीजें हमें इस महोत्सव में देखने को मिलेंगी, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनी होंगी। और ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में नासिक से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, योगेश शीतल। योगेश, प्रधानमंत्री जब नासिक पहुंचे तो सबसे पहले तो रोड शो के दौरान वहां पर जो तमाम लोग थे वो उमड़े सड़कों पर और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत उन्होंने किया, फूल बरसाए, नारे लगाए। योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल कृतिका, आपकी आवाज आ रही है जी। योगेश, जिस तरीके की हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नासिक में कालाराम मंदिर पहुंचे तो पूजा आराधना करते हुए नजर आए, भजन भी गाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। जी कृतिका, वो यहाँ पे देखिए रोड शो के बाद प्रधानमंत्री रामकुंड गए थे और उसके बाद जो कालाराम मंदिर आए हैं। कालाराम मंदिर में जो एक बहुत विशेष चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो पुरोहित समाज है और साथ में जो यहाँ के साधु संत समाज है वहां पे वो उनसे बात करने वाले हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि बहुत आप कह सकते हैं कि एक कालावधि के बाद जो है ये मौका नासिक में मिलेगा। हालांकि कई सारे ऐसी चीजें हुई है पिछले कुछ समय में जब प्रधानमंत्री ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई साधु संत से बात की थी, खास करके जब वो पूरा कॉरिडोर बन रहा था, ज्योतिर्लिंग का जो कॉरिडोर बन रहा था। हम जानते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग देश में है उसमें से एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर भी है, तो उसके थ्रू कई बार कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो पहली बार जो है आज यहाँ पर होगा। और जो कालाराम मंदिर है यहाँ की विशेषता ये है कि क्योंकि जो राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पे हैं और साथ में जो श्री हनुमान है, इनकी जो पूरी कलाकृति है वो काले रंग की है। तो ये यहाँ की विशेषता है। जिस तरीके से हम देखते हैं महाराष्ट्र में हर जगह की अपनी विशेषता है। अगर आप नांदेड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको हनुमान जी की जो सोए हुए हनुमान जी जो है वो वहाँ पे विराजे हैं। तो हर जगह का महाराष्ट्र का एक कल्चरल रिच कल्चरल जो हेरिटेज है उसकी एक झलक आपको नासिक में दिख जाएगी। नासिक में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये सब चीजें आपको दिखती है और उनमें से कालाराम मंदिर एक है। तो यहाँ पे अभी जो है प्रधानमंत्री जो पूजा अर्चना है वो करने के बाद जो साधु संत हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो यहाँ पे जैसा कि आप बता भी रही थी जो 27th यूथ फेस्टिवल है उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो होगा। जी कृतिका बताएं। यथावत कर्तुमर्हसि पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि।
चौपटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि And we continue to get to those pictures from Kala Ram Mandir. Prime Minister Modi offering prayers. He is also to participate in the National Youth Festival, a day that promises a blend of spirituality and celebration as Prime Minister connects with the cultural and youth essence of Nashik. Also bringing in Senior Executive Editor Abhishek Kapoor, who's with us on the phone line. Abhishek, very important day. Not only is Prime Minister receiving a rousing welcome from his supporters in Nashik, but also prayers at Kala Ram Mandir, then participation in the National Youth Festival where he will be delivering an address, and most importantly, the biggest gift that he gives to Maharashtra. Well, obviously, that would be in a while when Prime Minister lands in Mumbai and inaugurates the Atal Setu, the Mumbai Trans-Harbour link. Has been in the making for some time. 4 decades in planning, finally executed, 18,000 crores rupees worth of project. But Suesha, Prime Minister praying at the Shree Kala Ram temple itself in Nashik on the banks of Godavari is significant because remember, the day began with him announcing or sending across a message through his social media platforms that he would be carrying out an 11-day Anushthan, which is essentially a process of penances to purify the Yajman before the actual Pran Pratishtha happens, which is on January 22nd. And he feels one with the nation, with the society in preparing himself for that big occasion. And the place today, the Kala Ram Mandir, the geography of it is important because it is historically identified with Panchvati, where had spent a lot of time during his Vanvas. And it was this region which is associated with a lot of historical antecedents insofar as Lord Ram's period of life of Vanvas is concerned. So the Prime Minister visiting this place just 10 days before the Grand Pran Pratishtha at the Ayodhya Ram Temple, which has been constructed, and it gains some significance itself. Having said that, there would obviously be the element of a lot of focus on Maharashtra. We saw that roadshow in which Prime Minister was accompanied by Chief Minister Eknath Shinde, the 2 Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, among others, and the party president and the Minister Bavan Kule. So I think what we are seeing is effectively a soft touch insofar as the cultural aspects are concerned, and then the hard push when the development aspects are to be under focus, which would be when the Prime Minister dedicates to this geography some projects, and then he addresses the National Youth Foundation, National Youth Day event, because remember today also is Swami Vivekananda's birth anniversary, which is marked as the National Youth Day. And then, of course, he travels to Mumbai and the dedication to the people of Mumbai, to the people of Maharashtra, and of course, given the scale of the project, people of the nation, the Atal Setu, the Mumbai Trans-Harbour link, which has been built at a cost of 18,000 crore rupees, massive development push coming in, connecting South Mumbai with the Navi Mumbai, and reducing the travel time from anything between 1 hour, 15 minutes on an easy day to maybe 2.5 hours on a congested traffic day to just about 20 minutes on that freeway, which is built 80% over the sea. So of the 21 kilometers, about 16 kilometers is over the sea, 5 kilometers only on land. And it's an engineering marvel in many ways. So the Prime Minister talking about both heritage and development together and sending across that message with his day spent in Maharashtra between Nashik and Mumbai.
Oh, yes, absolutely. And an elaborate project costing over 17,000 crore rupees. Like you're saying, Abhishek, hugely needed in a city like Mumbai that grapples with traffic on an everyday basis. And an engineering marvel indeed. Atal Setu is the longest bridge and also the longest sea bridge that the country would have ever witnessed. So while that is certainly expected to happen later in the day, but Prime Minister will also inaugurate and address the 27th National Youth Festival, and he will also be delivering an address at that time. As we currently stay with these pictures, Prime Minister offering prayers at Shree Kala Ram Mandir in Nashik, and like every time, Abhishek, the crowds waiting to catch a glimpse of Prime Minister Modi. Exactly what we also saw in Nashik, where he got a rousing welcome by all his supporters. And then you're saying that the day, as constructively as it could be planned, where he's also visiting the Mandir, after which the National Youth Festival, and then he moves to Mumbai to inaugurate Atal Setu. Like I mentioned, Prime Minister in Ayodhya, for example, when he had dedicated those projects for 15,000 crore rupees, had talked about, and the airport had talked about coming together of Vikas and Virasat and projects like the Ram Temple. So he's not just talking about faith. Obviously, faith is integral to these projects like the Ram Temple, like the Kashi Vishwanath corridor, like the Somnath corridor, like the Ujjain Mahakal corridor. But there is coming together of both development and heritage in many ways because of the kind of economic push that these projects bring in. So, for example, today when he was he landed in Nashik at the event before this, he was made to hear the epic Ramayana and the Yuddha Kand, but it was in Marathi, and the Prime Minister heard it in Hindi via an AI translation. So the coming together of tradition and technology, and he makes it a point to sort of in every event bring in some element or the other of getting a development mix going, even as he's giving a push to heritage, tradition, tourism, like he did, for example, when he visited Lakshadweep about 10 days back. The kind of tempest it has generated, even culminating with the possibility of a no-confidence motion against the government in Maldives. So I think he sort of uses every opportunity, every event, every place where he goes, every occasion where he participates, and to make sure that it takes things in a certain direction. It is pro-development. It galvanizes the society, and so like we are seeing in this case, he's seen prayer. Before that, he was listening to the Yuddha Kand via AI app, AI translation app built indigenously, and while the rendition was in Marathi, he was listening to it in Hindi, and again, as I said, a lot of tradition, symbolism, given the fact that he is beginning his 11-day Anushthan, which is essentially a series of penances and purification rituals that you do before the actual Pran Pratishtha. And obviously, he must be doing under the guidance of religious heads. And he begins it from the banks of Godavari in Nashik, a geography identified as Panchvati, where Lord Ram, along with goddess Sita and Lakshman, had spent a considerable amount of his vanvas in the forests in the region. So obviously, every bit is planned and every bit is loaded with symbolism and messaging, like Prime Minister does with every event that he participates in. Oh, yes, absolutely. It is, Abhishek. And we are staying with these pictures and how the day has panned out so far for the Prime Minister in Nashik, where that mega roadshow that he conducted and the rousing welcome that he received, after which he also offered prayers at Kala Ram Mandir.
and most importantly on a day when he's paying tribute to Swami Vivekanand. Of course, later in the day when he is set to inaugurate the Atal Setu. And as you continue to stay with us, Abhishek, if you could also give us a sense of the timeline to how and when can we expect to hear from the Prime Minister when he addresses the National Youth Festival, and what time is he likely to inaugurate the Atal Setu bridge? Well, that's later in the afternoon, Suesha, most likely second half of the day, and obviously because when he lands in Mumbai and from the Kolaba area, he takes the newly built Atal Setu, inaugurating it, and travels all of 21 kilometers, reaches Navi Mumbai, and that's where the inaugural event and other events where he would be laying foundation stone, for example, of a 9-kilometer long underground causeway connecting North Mumbai with Central Mumbai. He's also going to lay foundation stone of that. And so that's also going to be one of the significant development projects. Mumbai, in fact, is undergoing tremendous amount of change, finally perhaps inching closer to the Shanghai dream, which has been talked about for at least 2 decades. And together with this Atal Setu and the other sea link which is being built on the western flank of the Mumbai south and connecting south and north, clearly is going to change the face of Mumbai. Also, there is obviously going to be an element of politics. Remember, we are talking about all these developments at a time when announcement of general elections is just possibly a month away, and there is already talk of seat adjustment, seat sharing, as in the case of the ruling dispensation led by the BJP, so in the case of opposition. Maharashtra has had a tumultuous politics over the last 2-3 years, and we have seen the change of government from the Maharashtra Vikas Aghadi post rebellion led by Eknath Shinde in the Shiv Sena, subsequently a rebellion led by Ajit Pawar in the NCP. We saw a verdict coming in of the speaker just 2 days back, and another verdict is going to come, like in the case of Shiv Sena split, so in the case of NCP split in another 15 days. The verdict has to come before the 30th of this month. And so I think there is a lot of jousting happening between the respective allies in the two groupings in Maharashtra. It's not going to be easy for the BJP also, just as it's not easy for the Congress to handle Shiv Sena. And in fact, the BJP has to handle both the Shiv Sena, the original Shiv Sena now as it is called, of the Eknath Shinde camp, and then of course the ambitions of the Ajit Pawar group. Seniors like Praful Patel are there in it, and it's not going to be easy to handle the ambitions because they would want their own share of seats. Whether the BJP has to make a climb down from the number of seats it contested 2019, all the seats remain there. But as of now, of course, the focus entirely on all the events that the Prime Minister is going to address, inaugurate, lay foundation stone of in terms of projects, and focus entirely on the development dynamics of Maharashtra today.